Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 26th and 27th of October. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. In this video students, we are talking about an investment scheme to the central government employees that has been launched, that has been basically extended. Then we will be talking about a new helpline number, that is 1515 for the Poshan and PMMVY, right? That will be coming into effect from 1st of November 2025. We will be discussing about these two schemes also. Then we will be talking about Ministry of Mines. They have recognized IISc and CMET as the new center of excellence under the NCMM mission. What is this? We will be discussing. And then we will be talking about UNCTAD 16 that was held in Geneva, Switzerland. So all these things and many more will be discussed here, students. So stay tuned with us till the end. Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Let's start with national affairs. We are talking about Government of India that has recently approved the extension of LC75 and BLC investment schemes to the central government employees. What are these schemes about, right? And how they will be benefiting the central employees and what are the use of it? First of all, you need to understand what is this LC75. LC75 is your life cycle 75 and BLC is your balanced life cycle investment options to the central government employees. This is under your NPS, that is your national pension system or national pension system, and your UPS, that is your unified pension system. This was announced by whom? It was announced by the Ministry of Finance. So this move, it will enable flexibility for the employees to plan their retirement and manage their savings according to the individual preferences, right? Then there are certain other schemes such as your scheme G, that is 100% investment in the government securities with low risk and fixed returns. Then LG25, that is up to 25% it will be invested in equities, tempering gradually from 30 to 35 age. Then this is LC25. Then LC50, that is 50% in equities. LC75, that is 75% equities. And BLC, that is your modified LC50 with equities exposure tapering from age 45 and lowering the and allowing the longer equity participation. Right here you can see the rest option. Correct. This has been introduced by whom? Ministry of Finance, and it is Government of India. Correct. With this, flexibility will be provided. Equity exposure will be there because equity is basically your stocks. Right. Then you will be seeing diversified options will be provided here and individual preference will be provided. And also, as you know that in NPS, right, you have to buy some annuity also, right? Annuity buying is compulsory for almost 40% of the corpus that you accumulate over a period of time, right? And these things has been provided to the central government employees. Moving on students, next is your Ministry of Women, Child and Development. They have announced the launch of a new toll-free helpline number, that is 1515, starting from 1st of November 2025. I repeat, this new number will replace the existing helpline 14408 for the beneficiaries of the Poshan Abhiyan and Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana. I repeat, so what is the new helpline number that has been launched for the Poshan and Pradhan Mantri Matru Vandana Yojana starting from 1st of November 2025? The helpline is 1515. What is the ministry that launched it? It is the Ministry of Women, Child and Development that has launched it. And the question that can be asked is that this 1515 helpline number, it will be replacing the which existing helpline number? It will be replacing 14408. Very important students, and you have to also remember the ministries here. Moving on, next is Ministry of Mine. They have recognized IISc, that is in Bengaluru, Karnataka, and CMET, that is your
Center for Materials for Electronics Technology, that is in Hyderabad, Telangana, as the Center of Excellence under the National Critical Minerals Mission. See, this mission, or we can say the critical minerals, they are quite important for the development of in our India and for the economic development of our nation, right? And these critical minerals, they are used in various equipments, in various digital equipments, right? Say for example, if we talk about electric vehicles, we talk about semiconductors, we talk about other gadgets, right? In those we are using these critical minerals. Even in we are using them in bio sector, that is your pharmaceutical sector, right? So to enhance the use of them, for doing research and development on them, for their exploration, we are seeing that this COU, that is your Center of Excellence, correct, and it is Ministry of Mines, they have recognized two more new institutes, that is IISc Bengaluru, Karnataka, and Center for Materials for Electronics Technology as the Center of Excellence under National Critical Minerals Mission. And till now, till October 2025, it is 9 institutes or 9 center of excellence that has been recognized so far. Earlier there were 7 and 2 more has been added, and now the total number is 9. Moving on, next, international affairs. UNCTAD 16 was held in Geneva, Switzerland from 20 to 23rd of October. Where was this held? It was held in Geneva, Switzerland, and there is a theme here, students, that I want you all to remember. Theme being shaping the future, driving economic transformation for equitable, inclusive and sustainable development. See, this focus here was on how we can enhance the sustainable development. We are seeing that the pollution globally is rising. If we just talk about India, that recently there was Diwali, right? And we are seeing in North India the pollution level is increasing, and in Delhi also we are seeing that on 29th of October there will be cloud seeding trials. What is this cloud seeding? Cloud seeding is basically a method where aircraft artificial rain is done, right? This cloud seeding means artificial rain with the help of an aircraft, right? In clouds, some chemicals will be sprayed. These chemicals are silver iodide, right? They will be sprayed there, right, which will be making the water vapor heavier, and which will in turn result into rainfall, correct? That is your cloud seeding. So this will impact the pollution and it will reduce the pollution in that area, right? So this was just an example, right? And we need to focus on sustainable development goals, right? The pollution, the population globally, it is increasing. We need to manage the resources properly so that all the people are able to manage it, right? Take a note of this, students. Next is one more thing that I want you all to remember here is, here the key outcome, that is launch of Spain-led Sevilla Forum on Debt, right? This Sevilla Forum on Debt, it was to create an open inclusive platform for the dialogue and action on global debt challenge, specifically for the developing countries. It was led by whom? It was led by Spain and supported by UNCTAD along with United Nations Department of Economic and Social Affairs. This is important, so take a note of this, right? And here you can see adoption of the Geneva Consensus for Just and Sustainable Economic Order Declaration. Moving on, students, we are talking about the 4th edition of FATF, that is your Financial Action Task Force plenary meeting, that was held from 20 to 24th of October in Paris, France, right? And Jamaica and Nigeria, right? They have joined the FATF plenary and working group meeting for the first time, along with Kenya under the guest initiative. This FATF plenary, it adopted the first 2 mutual evaluation reports under the assessment system covering Belgium and Malaysia, which focuses on result in tackling money laundering, terrorism and proliferation financing, right? Take a note of this. Also remember 4 jurisdictions, that are Burkina Faso, Mozambique, Nigeria and South Africa. They have been removed from the list of the countries under increased monitoring, known as your grey list. So these countries, they have been released from the grey list. What is a grey list? It is a list of the countries that promote or that do terror financing. Right? So very important, students, this is the 4th edition of the FATF plenary meeting. It was held under the Mexican presidency and it was held from 22 to 24th of October in Paris, France, and Nigeria and Jamaica, they have joined the FATF plenary meeting, whereas 4 countries has been removed from the grey list. They are Burkina Faso and Mozambique, Nigeria and South Africa.
Next is students Vivek Menon, as you can see him in the picture, elected as the first Asian chair of the IUCN Species Survival Commission for 2026 to 2029 term. Right, IUCN International Union for the Conservation of Nature. Right, so Vivek Menon, he's an Indian wildlife conservationist, environmental commentator, and author as well as a photographer, and he has been elected as the chair of the IUCN International Union for the Conservation of Nature Species Survival Commission. And what is the term here? It is 2025 till 2029, and he became the first Asian to lead SSC in 75 years history. Correct. Who has been recently re-elected as the president of IUCN? If asked, president of IUCN. President of IUCN. Right? Who he will be the president, or he has been re-elected here. So Razan Khalifa Al Mubarak. Right, Razan Khalifa Al Mubarak. Take a note of this. Correct. Also here, remember, recently Tuvalu, right, a small island country in the West Central Pacific Ocean, has joined IUCN. It became the 9th state member to do so. Next, not 9th, 90th. I correct myself. Next is Indian Bhutan border management and security meeting was held in Thimphu, Bhutan. I repeat, students, India Bhutan border management and security meeting was held in Thimphu, Bhutan. Right? Direct this question can be asked. This was the 14th edition of the India-Bhutan meeting on border management and security that was held in Thimphu, Bhutan from 16th to 17th of October, and it is to review and enhance the bilateral security cooperation and coordination along the shared border between the two countries. Right? Very important. Here, future roadmap of integrated checkpost, maintenance of boundary pillars and cross-border movement will be taken into consideration. Next is banking and finance students. RBI has recently launched a global hackathon, that is Harbinger 2025. This will boost secure inclusive banking solutions. I repeat, this is the 4th edition of their global hackathon, that is Harbinger. What is a hackathon, students? Hackathon is basically where a problem statement is given to multiple teams, and those teams, they find solutions for the problem, and the best teams that are giving the best solutions here, they will be selected, and they will be further funded to carry out their particular venture that they were working upon, and further they will be also guided that how they can enhance their startup or how they can start their startup. Right, various use cases are founded here, various other incentive initiatives are provided here, correct, to the startups that are working in this hackathon. So RBI, they have launched this global hackathon, that is Harbinger, to boost secure inclusive banking solutions. Right, students, it is RBI that has launched it. What is RBI? RBI is your Reserve Bank of India. And if we talk about RBI, who is the governor here? Sanjay Malhotra is the governor, headquarter Mumbai, Maharashtra, and it was established in 1935. So students, here you need to understand that there is a problem statement, then startups will be funded here, right? They will be funded, or they will be provided with funding to grow, right? This is the 4th edition of this Harbinger. This is a global hackathon launched by RBI. What is the winner prize? 40 lakh rupees, runner up 20 lakh rupees, and various other prizes will also be provided here, right? Also, RBI exemption here is that the Swami Fund 1 allowed under the special AIF exemption here, correct? This is also you need to remember, correct? Take a note of it. Okay, if we talk about this Swami Fund, it was launched in 2019. This is a government-backed initiative, and this is basically managed by SBI Cap Ventures Limited, that is a subsidiary of State Bank of India. And the main aim of this Swami Fund was to focus on providing debt financing to the completed, stalled and stressed residential projects in the affordable and mid-income housing. You must have seen that in various urban areas in tier 1 cities, multiple housing projects, they get stalled, right? Be it any reason, right? In order to revive those stalled projects, right? In order to provide them the requirement funding to start the incomplete work of that particular residential units, right? This Swami Fund was launched, right? And it is now saying that Swami Fund now allowed under the special AIF exemption. If we talk about RBI, we have seen who is the governor, Sanjay Malhotra.
Moving on. Next is World Bank approves $280 million loan to Kerala under KHSIP. What is KHSIP? It is your Kerala Healthcare System, right? That is your Kerala Health System Improvement Program. K, Kerala Healthcare. S is for system. I, improvement. P for program. So it is World Bank. They have approved this $280 million loan to Kerala under Kerala Health System Improvement Program with an aim to enhance the healthcare system of Kerala. This initiative will focus on improving the quality of life and life expectancy for almost 11 million elderly and vulnerable individuals in Kerala. Right? How much is the loan? It is $280 million and it is IBRD. Right? That is an arm of World Bank only. They have provided this loan. And how many beneficiaries are there? Almost 11 million beneficiaries are under this. Who is the Chief Minister of Kerala? Pinarayi Vijayan is the Chief Minister and Trivandrum is the capital here. Moving on, students, to next. Next is City Union Bank has unveiled a new digital payment solutions at the Global Fintech Fest 2025. I repeat, City Union Bank, right? Recognized as one of the India's oldest and most trusted private sector banks, made a significant impression at the Global Fintech Fest 2025 that took place in Mumbai from 7th to 9th of October. This Global Fintech Fest, it was organized by the Payment Council of India, National Payment Corporation of India and Fintech Convergence Council. And where was this held? It was held at the Geo World Convention Center in Mumbai, Maharashtra, right? And it is City Union Bank that has been recognized as one of the India's oldest and most trusted private sector bank, right? Also remember, City Union Bank and along with NPCI and various other fintech partners has launched IoT based UPI payment services, right? That is your Internet of Things based UPI payment systems. Then AI driven support has been provided here. Biometric authentication has been launched, so that will be beneficial. Let me give you some example. For example, UPI Circle was launched here, that is secure UPI payments via IoT device was launched. Then UPI Reserve Pay was launched, that is single block multiple debt system was launched. UPI Help, that is your AI powered support has been launched here. Then UPI enabled cash withdrawal, that is has been launched here. Apart from this, BioAuth and face authentication, that is bioauthentication and face authentication, that is additional authentications that has been launched here. CUB Depend, that is credit line on UPI will be provided by City Union Bank. NTB Flow, that is loan against the mutual funds, that has been launched. City Union Bank Desire, that is systematic saving plan, that has been launched. City Union Bank Rupee MSME, that is an AI enabled credit card. So these are certain things that has been launched here that I want you all to remember, correct? And they were launched during the Global Fintech Fest that was held at Geo World Convention Center in Mumbai, Maharashtra. Next is Economy and Business Students. BEML, that is Bharat Earth Movers Limited. They have recently signed an MOU with Italy's Temsec SPA to introduce the surface miner equipment in India. I repeat, BEML, Bharat Earth Movers Limited. This is a public sector undertaking. It comes under the Ministry of Defense and they have signed this memorandum of understanding with Italy's Temsec SPA, right? This will be introducing surface miner equipment for the mining operations in India. See, if you need to mine, you need to have better equipments. You need to have upgraded equipments, and these equipments should be strong enough. They should be durable enough to withstand the pressure, the temperature and the hardness of the surface, right? And this partnership, it will enhance the efficiency, safety and sustainability of the mining operations in India. Right, students, take a note. Moving on. Next is ICG, Indian Coast Guard. They have launched two advanced fast patrol vessels, that is ICGS Ajit and Indian Coast Guard ship Aprajit. They have launched where? At Goa Shipyard Limited, that is in Panaji, Goa. That is in Panaji, Goa. I repeat, Indian Coast Guard, right? They have launched two advanced fast patrol vessels, that is Indian Coast Guard ship Ajit and Indian Coast Guard ship Aprajit, correct? They were launched where? At Goa Shipyard Limited in Panaji, Goa. Very important, students, take a note of this. Their length is almost 52 meters. Next, if we talk about Indian Coast Guard, students, who is the Director General of Indian Coast Guard? Pramesh Sivamani. Pramesh Sivamani is the Director General of Indian Coast Guard. Next,
Next is NASA has confirmed asteroid 2025 PN7 as the Earth's new Kasi moon. So what we can say, we have Earth, we have a moon, and now there is another Kasi moon that has been declared as 2025 PN7, right? And it will be in the revolving around the Earth only, similar to that of moon. Correct? It is a Kasi moon. It is not a moon, but similar to that of a moon, right? As it will be revolving around Earth only, and it is NASA that has declared this, and this Kasi moon, that is 2025 PN7, it will be revolving around Earth till 2083, that is 2083. It will be revolving almost for next 60 years. Correct, students? Take a note of this. Then next is BWF World Junior Championship was held where? In Guwahati, Assam recently, right? That is Badminton World Federation World Junior Championship held at the National Center of Excellence in Guwahati, Assam from 6th to 19th of October. This was the second occasion in India hosted the prestigious event, with the inaugural hosting that took place in 2008. And during that event, India, right, our country secured the first ever bronze, correct, in the Suhandita Cup. Right, students, take a note of this. Then where was this held? In Guwahati, Assam, 6th to 9th of October, and India hosting it for the second time, first in 2008. And Suhandita Cup winners, gold was won by China, Indonesia silver, and our India and Japan, we won the bronze medal. Correct, students? Next is, okay, one more thing under this only, under this Badminton World Federation World Junior Championship, two events that I need you to remember were held. That is your Suhandita Cup and I-Level Cup. I-Level Cup and Suhandita Cup. Next is Obituary, students. Thailand's Queen Mother Shrikit Kitiakara has recently passed away. I repeat, Shrikit Kitiakara has recently passed away. Right, she passed away at the age of 93 in Bangkok, Thailand. She was born on 12th of August 1932 in Bangkok. Right, take a note of this. Very important. Then next, students, next is important is Global Media and Information Literacy Week, observed from 24th to 31st of October, and it is to raise awareness and highlight global progress in promoting media and information literacy for everyone. Theme I that want you all to remember here is Minds Over AI, MIL in Digital Spaces. Right, it is observed from 24th to 31st of October, observed by UNESCO, first time observed in 2012, and it is to promote media and information literacy for all. Then next is World Polio Day, observed on 24th of October, students. This day is observed to raise awareness about the highly infectious disease, that is your polymyelitis virus, right? And this affects children under the age of 5 and it attacks the nervous system. Correct, take a note of this. And you must have remember that there was a campaign also that was launched, that is Char Boond Zindagi Ki, right? That was for polio. That was in that ad, particular in that campaign, Amitabh Bachchan played a quite important role. Correct. And India was declared polio free in 2014 by World Health Organization. That is also I need you all to remember. Next is your World or Disarmament Week, observed from 24th to 30th of October, and this day is observed across the globe to highlight the global disarmament efforts that foster international peace and security. It is observed from 24th to 30th of October, and here the aim is basically to disarmament efforts, right? Global disarmament efforts for the arms, right? We should not have these bombs, we should not have these missiles, right? Because it caused destruction, it caused loss of both manpower, humans, as well as for the property, right? Even there is a day when we are talking about elimination of the nuclear weapons, because it is a mass destruction weapon, right? So this day, that is Disarmament Week, observed from 24th to 30th of October. So that's all for the day, students. Now it's time for us to move to the revision part that will be quite beneficial for you all. BRO, that is your Border Road Organization, has built the world's highest motorable road at Megla Pass at an altitude of 19,400 feet in Ladakh under the project Himang in October 2025. Right, so take a note of this height, built by BRO, and this has also been a Guinness World Record. Next, the 71st Wildlife Week, observed from 2nd to 8th of October across India. Which of the following projects was not launched during the Wildlife Week 2025 celebration presided over by the Union Minister Bhupendra Yadav in Dehradun, Uttarakhand? So
So among the following, if we see, Project Snow Leopard was not launched here, right? So this is our answer. Project Dolphin was launched, the phase 2 of it. Project Sloth Bear, Project Ghadial was launched. Then Tigers Outside, that is Project Tiger Outside Tiger Reserve was launched. Correct? Next. Next is, which city has been declared as India's safest city for the fourth time consecutively as per the Crime in India 2023 report released by National Crime Records Bureau under the Ministry of Home Affairs. So it is Kolkata, West Bengal, that has been declared as the safest city for the fourth time. If we talk about the unsafe city in India, which is it? It is Kochi. Kochi is in Kerala. Next. Next is state duration of implementation for the 1500 crore rupees critical mineral recycling incentive scheme whose detailed guidelines were issued by the Ministry of Mines. So state the duration here. It is for FY 26 to FY 31. Next, which ministry launched the People's Plan Campaign 25-26, that is Sabki Yojana Sabka Vikas Abhiyan, in October to prepare Panchayat development plans for FY 27. So which ministry has launched this People's Plan Campaign? It is Ministry of Panchayati Raj. The campaign here aims to promote participatory, transparent and accountable local governance by engaging communities through Gram Sabha meetings. Next. Next is choose the institution where Union Minister Ashwini Vaishnav has recently approved the establishment of the Namo Semiconductor Laboratory in October to boost indigenous semiconductor facilities. So choose the institution. It is IIT Bhubaneswar of Odisha. Next, where was the 42nd session of the International Civil Aviation Organization Assembly held from September to October? It is Montreal, Canada. Right? Take a note of this. And this was this ICO Council. During the 42nd ICO Assembly, 36-member council elected for a 3-year term. Next, pick out the correct statement regarding the RBI directions issued in September. If we look at the options here, option A is right and C is right, B is wrong. B is saying that these directions shall come into force from 1st of January 2026. No, they will be coming into force from 1st of October 2025 onwards. Next is in September, Axis Bank in partnership with Dash launched India's first gold-backed credit line on UPI, aiming to simplify working capital access, business growth financing and urgent liquidity needs. So Axis Bank in partnership with Freecharge, right? They have launched India's first gold-backed credit line on UPI. Moving on, RBI, they have announced a new scheme unveiled from which date to which date? It was from 1st of October till 30th of September for facilitating the accelerated payout to ensure faster settlement of inoperative accounts and unclaimed deposits that are lying within the bank account, so that people can get their money back, or the people who are their relatives should get their money back. Correct? Next, in September, SEBI, they have extended the deadline for the complete rollout of Dash to April 1st. So SEBI, they have extended the deadline for the complete rollout of retail algorithm trading to 1st of April 2026. Now, as AI is in the picture, now the retail investors will also be allowed to use algorithms for trading into the retail market or for trading on the equities. Correct? And the platform is jointly managed by two quality registrar and transfer agents. They are CAMS, the famous one, that is Computer Age Management Service Limited, and the second one is KFIN Technologies. Right? Next is in September, RBI has imposed a penalty of 31.8 lakh rupees on which bank for non-compliance with the direction on priority sector lending targets and classification. So RBI has imposed a penalty of this 31.8 lakh rupees on Indian Overseas Bank. Next, how much loan amount was approved for the development of Indore Metro Rail project in Madhya Pradesh by Asian Development Bank? So what was the amount here? It was $190 million. Next, identify the organization that was granted self-regulatory organization status by RBI in October for the asset and loan financing of NBFC. So identify that organization. It is FIDC, that is your Finance Industry Development Council.
Next is select the organization that collaborated with SEBI to develop the validated UPI handles and SEBI check initiatives launched in October 25 to strengthen the investor payment security. It is NPCI, National Payment Corporation of India, right? And they have launched a handle also at the rate of valid. Next, identify the bank that in partnership with Ubuntu Systems Private Limited launched India's first youth-focused digital banking application, that is Cosmos Galgal app, in October 2025. So identify the bank that in partnership with Ubuntu Systems Private Limited have launched this. It is Cosmos Co Private Bank Limited. Right. Next, name the product launched jointly by the PhonePe and Utkarsh Small Finance Bank in October through the PhonePe application, which offers a fixed deposit backed credit card facility starting from 2000 rupees. It is Wish credit card, right? This is the product jointly launched by PhonePe and Utkarsh Small Finance Bank. Next is, what is India's GDP in both FY26 and FY27 as forecasted by Asian Development Bank in their report. ADB growth slows as a new global trade environment takes shape September 2025. This was released in September 2025. So what is India's GDP here? It is 6.5 that is being projected. Next, find out the individual who is not among the top 5 richest Indians as per the M3M Huron India Rich List released in September. If we see here, Shah Rukh Khan is not among the top 5 richest Indians here. Remember, this is the 14th edition of the M3M Huron India Rich List, and it is Mukesh Ambani, the chairman of Reliance Industries Limited, that has secured the top position with 9.55 lakh crore of total net worth, and Gautam Adani and family secured the second position here. Next, identify the person who were announced as the winners of the Nobel Prize in Physiology or Medicine in October. If we look at the options here, Simon Sagaguchi, Mary E. Birknow, and Fred Ramsdell. These are the 3 individuals, these scientists were awarded with the Nobel Prize in Physiology or Medicine. Correct? Next is, choose the ministry that implements the National Service Scheme under which My Bharat NSS Award 22-23 were presented by the President of India Draupadi Murmu ma'am in October. So choose the ministry that implements this National Service Scheme. It is Ministry of Youth Affairs and Sports, and a total of 50 recipients here were awarded. Next, who among the following jointly received the 2025 Nobel Prize in Physics for their discovery of macroscopic quantum mechanical tunneling and energy quantization in electric circuit? So if we'll see here, all these 3 options are rightly mentioned. The laureates here demonstrated that the quantum mechanics governs the macroscopic systems with Josephson junctions underpinning the quantum computers, flash memory, and ultra-precise quantum sensors. Next, identify the new Managing Director and CEO of Union Bank of India and Central Bank of India respectively appointed by ACC. If we look at here, so Ashish Pandey has been appointed as the MD and CEO of Union Bank of India and Kalyan Kumar as the MD and CEO of Central Bank of India. Next, who was appointed as the brand ambassador of Viksit Bharat Buildathon, a nationwide innovation initiative which aimed to engage the students from class 6 to 12th by the Ministry of Education. So, Subhanshu Shukla, right? He was recently appointed as the brand ambassador, and Subhanshu Shukla became the first Indian to reach the International Space Station. Correct? Through which mission? It is Axiom 4 mission, right? It was a mission of NASA where astronauts went to International Space Station, and it was Falcon 9 rocket that took them to space. Next, pick out the incorrect statement regarding the 15th edition of the World Para Archery Championship held in South Korea. If we look at the options here, all these 3 options are rightly mentioned. Next, mention the name of the countries going to co-host the inaugural Women's T20 World Cup Cricket for the Blind in November. So if we look at the options here, so it is India and Sri Lanka, right? Not third option, option 5th is right. India and Sri Lanka are going to co-host the inaugural Women's T20 World Cup for cricket for the blind people. Correct? Take a note of this, and this will be for the blind women. Next, mark the correct statement regarding the 12th edition of the World Para Athletics Championship hosted by India in Jawaharlal Nehru Stadium, right, from 27th of September to 5th of October.
So if we'll look at the option, all these three options are rightly mentioned, and Brazil has topped the medal tally with a total of 44 medals, whereas India finished in 10th position with 22 medals. Next is who won the 24th edition of F1 Singaporean Grand Prix on 5th of October at the Marina Bay Street Circuit in Singapore. So George Russell has secured the top position and he has won this F1 Singapore Grand Prix. George Russell drives for Mercedes and he is from which country? He is from UK. Then on second position was of Max Verstappen and Lando Norris was on the third position. Next is Padma Vibhushan awardee Pandit Channulal Mishra, who passed away in October, was conferred with Padma Bhushan in 2010 and Padma Vibhushan in 2020 for his contribution in the field of art. Correct? Take a note of this, students. Next, the United Nations International Day of Older Persons, observed annually on 1st of October to honor the rights and well-being of older people, was first observed in which year? It was first observed in 1991. Take a note of this. Next, the National Wildlife Week is observed every year in India from 2nd to 8th of October to promote awareness about the protection of wildlife and biodiversity. What was the theme of the 71st National Wildlife Week celebrated in 2025? So, it is Seva Parv, right? So, it is Seva Parv. Next, World Space Week. It is annual United Nations observance held globally to celebrate achievements in space sciences and technology. During which dates was the World Space Week celebrated under the theme Living in Space? It was from 4th to 10th of October we observe World Space Week, right? And living in space is the theme here. Living in space is the theme here. Next, identify the regulatory organization with which the PFRDA has signed a memorandum of understanding during the celebration of NPS Divas on 1st of October to enhance pension outreach in agriculture and rural sector. So identify that regulatory organization. It is NABARD, right? So NABARD and PFRDA, they signed this MOU during the NPS Divas that was on 1st of October. So this question can be asked that NPS Divas is observed when? It is on 1st of October. Next, when was the World Habitat Day observed globally by United Nations to highlight the state of human settlement and emphasize the right to adequate shelter for all? So when was World Habitat Day observed? It is 6th of October we observe World Habitat Day. First time this was observed in 1986. Next is who won the men's 100-meter title at the National Open Athletics Championship held at the Birsa Munda Stadium in Ranchi, clocking India's second fastest time of 10.19 seconds. So who won the men's 100-meter title here? It was won by Manikanta Holdiar or Hoblidar, right? Has clocked 10.19 seconds, India's second fastest time to win the men's 100-meter title. Next is, students, where is India's first Dugong Conservation Reserve located, which was formally recognized by IUCN, that is International Union for Conservation of Nature, during the World Conservation Congress 2025 held in September 25. So it is located at Park Bay in Tamil Nadu. Next, choose the correct theme of the International Coffee Day celebrated globally on 1st of October to highlight the fair trade, sustainability and the importance of coffee growers. So, choose the correct theme here. The theme being embracing collaboration more than ever is the theme here. Next, where did India's only mud volcano erupt after a gap of 20 years in October? So, where did it erupt? It was erupted at the Baratang Island of Andaman and Nicobar Island, and it erupted after 20 years. Next, who was appointed by UN Secretary General in October as the Special Representative for Children and Armed Conflict? So, Vanessa Fraser was appointed by UN Secretary General in October as the Special Secretary for Children and Armed Conflict. Next, who became the first person in the world to achieve a net worth of $500 billion as of October 25 according to the Bloomberg Billionaires Index? So, Elon Musk, right, he became the first individual to reach this staggering net worth of $500 billion. Next is our homework question, students. First question is, 5th edition of the Khelo India University Games will be held across how many cities and where in which state this will be held? Second question, who has won the MLS
golden boot with record breaking season. Then third question, tell me recently FIDE chess World Cup will be held where and in which state it will be held. Then fourth question, fourth is when do we observe World Anesthesia Day? What is the theme for this World Anesthesia Day also? And fifth question is World Statistics Day. When do we observe it and what is the theme of it? Tell me that. So that's all for the day, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम 26 एंड 27 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ LC 75 एंड BLC इन्वेस्टमेंट स्कीम सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए। ये बेसिकली आपकी पेंशन से रिलेटेड है। देन हम बात करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने लॉन्च करी नई हेल्पलाइन 1515 फॉर पोषण एंड PMMVY फ्रॉम 1 नवंबर। देन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने रिकॉग्नाइज किया IISc एंड CMET एज न्यू सेंटर ऑफ एक्सलेंस अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। एंड UNCTAD 16वीं कहाँ पर हुई? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई 20 से 23 अक्टूबर। इन सभी चीजों को डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो एंड तक बने रहिएगा। वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास राणा। We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. नेक्स्ट इज नेशनल अफेयर स्टूडेंट्स। इससे स्टार्ट करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूव किया एक्सटेंशन ऑफ LC 75 एंड BLC इन्वेस्टमेंट स्कीम। ये देखो, दोनों एक पेंशन स्कीम्स हैं। बेसिकली LC 75 होता है लाइफ साइकिल 75 एंड BLC होता है बैलेंस लाइफ साइकिल। ये दोनों आपके NPS नेशनल पेंशन सिस्टम एंड यूनिफाइड पेंशन सिस्टम के अंडर आते हैं। इनको अनाउंस किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा। एंड इनका एम क्या है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराना एम्प्लॉयज को कि वो कैसे अपने रिटायरमेंट में सेविंग करना चाहते हैं। इंडिविजुअल प्रेफरेंस होती है सबकी, जैसे होता है LC 25, LC 50, LC 75। ये क्या है? बेसिकली ये आपका तरीका है कि आप कितना परसेंट इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे 25 में 25%, 50 में 50%, 75 में आप 75% इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसमें हाई रिस्क हो जाता है। तो ये सारे इन्वेस्टमेंट के तरीके होते हैं, जिसमें आपका कैसे आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, राइट, आपका कैसा किस स्कीम्स में इन्वेस्ट करना है, आप क्या रिटर्न चाहते हैं। एंड अगर हम NPS में देखें तो यहाँ पे आपको एन्युटी भी बाय करनी पड़ती है कि आप कुछ ही अमाउंट वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। एंड 40% तक की आपकी कंपल्सरी एन्युटी आपको बाय करनी पड़ती है, जिससे आपकी हर महीने पेंशन बनती रहेगी। ठीक है, तो मार्क करके चलेंगे इसको। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, इन्होंने लॉन्च करी नई हेल्पलाइन नंबर 1515 फॉर पोषण एंड प्रधानमंत्री, दैट इज प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये बेसिकली स्कीम, आप जैसा नाम कह रहे हैं पोषण अभियान, इसका एम क्या है? न्यूट्रिशन मिशन है एक तरीके से, राइट। बच्चों को न्यूट्रिशन प्रॉपर मिलता रहे, राइट, उनको कभी दिक्कत ना आए, राइट, उनकी जो डेली न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो पूरी होती रहे, करेक्ट। एंड जो हमें एक माल न्यूट्रिशन देखने को मिल रहा है, हम उसको कहीं ना कहीं एलिमिनेट कर सकें। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के द्वारा जो पोषण एंड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, इन दोनों के लिए जो हेल्पलाइन नंबर पहले होती थी 14408, अब उसको रिप्लेस कर दिया है किससे? 1515 से। ये लॉन्च कब से हो जाएगी, ये लागू कब से हो जाएगी? 1 नवंबर 2025 से हमें लागू होती हुई दिखेगी। मार्क करके चलेंगे। एंड ये किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट के द्वारा। इसके बाद आ जाते हैं स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया IISc एंड CMET को एज द नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। ये जो नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन, इसका एम क्या है कि हमें क्रिटिकल मिनरल्स के ऊपर काम करना है। क्रिटिकल मिनरल्स इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है, राइट। क्रिटिकल मिनरल्स आप देखेंगे आजकल हर इक्विपमेंट में यूज होते हैं, हर टेक्नोलॉजी में यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल से लेके आपकी जो सेमीकंडक्टर चिप्स होती हैं, हर जगह हमें यूज होते हुए दिखते हैं। इवन फार्माक्यूटिकल सेक्टर्स में ही हमें यूज होते हुए दिखते हैं, राइट। तो अभी 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस थे हमारे जो क्रिटिकल मिनरल से रिलेटेड थे, अब वो बढ़ के कितने हो गए हैं? इसमें 2 का एडिशन हमें देखने को मिला है, तो अब 9 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमें देखने को मिलते हैं अंडर नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। चलिए फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे स्टूडेंट्स। UNCTAD 16 अभी कहां पर हुई? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। 20 से लेके 23 अक्टूबर तक ये हमें देखने को मिला था। UNCTAD क्या है? यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड
डेवलपमेंट। 20 से 23 अक्टूबर तक कहां पर? जिनेवा स्विट्जरलैंड में हुई। इसकी एक थीम याद रखेंगे, थीम रहेगी शेपिंग द फ्यूचर ड्राइविंग इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन फॉर इक्विटेबल इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फोकस रहेगा सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, फोकस रहेगा कि कैसे हम लोगों की लाइफ को और बेटर कर सकते हैं। यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज याद रखेंगे, एक तो है स्पेन लेड सेविला फॉर्म ऑन डेट, यह भी लॉन्च किया गया। ये एक ओपन इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म है जहां पे ग्लोबल डेट जो चैलेंज है उसको काम करने की बात की गई, मतलब जो पूरी दुनिया के ऊपर कर्ज है, जैसे हम कहते हैं अभी यूएस के ऊपर ऑलमोस्ट $38 ट्रिलियन तक का कर्ज होने वाला है, जो कि हम कुछ साल तक पहले देख रहे थे, 1 या 2 साल तक, जो कि $32 ट्रिलियन था। मतलब इतनी तेजी से यहाँ पे डेट बढ़ता हुआ दिख रहा है, इतनी तेजी से पैसा प्रिंट होता हुआ दिख रहा है, जिससे हमें इन्फ्लेशन देखने को मिलेगी। एंड इसी का रीजन है स्टूडेंट्स, आज के टाइम पे आप देखेंगे रियल एस्टेट, चाहे वो गोल्ड हो, चाहे वो आपकी इक्विटीज मार्केट हो, हर चीज, इवन बिटकॉइन अभी ऑल टाइम हाई पे चल रही हैं ये सारी चीजें, राइट, विच इज नॉट गुड, राइट, क्योंकि इससे क्या होगा, इन्फ्लेशन आएगी। लोग ये जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं इतने महंगे होते हुए दिख रहे हैं आने वाले टाइम में हमें, जो कि फर्दर और इन्फ्लेट होते हुए दिखेंगे क्योंकि डेट बढ़ता हुआ दिखेगा। तो ये हो गई पहली चीज। दूसरी है जिनेवा कंसेंसस फॉर जस्ट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ऑर्डर डिक्लेरेशन, दूसरी ये चीज यहां पे अपनाई गई। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं 4th एडिशन ऑफ फॉरेन एक्शन टास्क फोर्स प्लेनरी मीटिंग, जो कि अभी 22 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक हुई। कहां पर? पेरिस, फ्रांस में। देखो FATF ये क्या, यहां पर एक ग्रे लिस्ट होती है स्टूडेंट्स, FATF की ग्रे लिस्ट वो होती है जो टेरर फाइनेंसिंग करते हैं ना, उन कंट्रीज को यहाँ पे डाला जाता है। मतलब टेरर, आतंकवाद को जो फाइनेंस करते हैं, राइट, टेररिस्ट को जो फाइनेंस करते हैं, वो टेररिस्ट उसमें जो टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं उन कंट्रीज को यहाँ पे ग्रे लिस्ट में मार्क किया जाता है। तो चौथा एडिशन है ये FATF प्लेनरी मीटिंग का, जो 22 से 24 अक्टूबर तक हुई, पेरिस, फ्रांस में हुई। यहीं पे हम देखेंगे अभी रिसेंटली जमाइका एंड नाइजीरिया, राइट, इन्होंने FATF प्लेनरी मीटिंग को ज्वाइन किया फॉर द फर्स्ट टाइम। एंड यहाँ पे कीनिया गेस्ट इनिशिएटिव रहेगा। इसी के अलावा 4 कंट्रीज याद रखेंगे आप जिनको अभी ग्रे लिस्ट से रिलीज किया गया है, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, नाइजीरिया एंड साउथ अफ्रीका। ये वो 4 कंट्रीज हैं जिनको अभी रिमूव किया गया है। कहां से इनको रिमूव किया गया है? ग्रे लिस्ट से, ठीक है। एंड ग्रे लिस्ट कौन सी होती है? जैसे हमने देखा था, जहां पे जो कंट्रीज टेरर फाइनेंसिंग करती है। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं एक और चीज, ये जो प्लेनरी मीटिंग थी ये 4th एडिशन था इसका, जो कि पेरिस, फ्रांस में हुआ। इसके बाद आ जाते हैं विवेक मेनन इलेक्टेड एज द फर्स्ट एशियन चेयर ऑफ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन 2026 से 2029 टर्म के लिए। मार्क करके चलेंगे स्टूडेंट्स इसको, ठीक है। IUCN की, जो कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये रेड लिस्ट रिलीज करते हैं। रेड लिस्ट वो लिस्ट होती है जहां पर आपके फ्लोरा एंड फौना जो एंडेंजर्ड, राइट, स्पीशीज हैं उनको यहाँ पे मार्क किया जाता है, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे वो फौना की स्पीशीज हो। तो अभी IUCN की जो स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन है उसमें यहाँ पे पहले एशियन कौन चेयर इलेक्ट किए गए हैं? वो है विवेक मेनन। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक इंडियन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट, इन्वायरमेंटल कमेंटेटर, ऑथर एंड इवन अ फोटोग्राफर है जिनको यहाँ पे इलेक्ट किया गया। एंड ये पहले एशियन बने हैं टू बी इलेक्टेड एट दिस पोजिशन। एंड इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहाँ पे तुवालू एक स्मॉल आइलैंड कंट्री है वेस्टर्न सेंट्रल पैसिफिक ओशन में, एंड इन्होंने IUCN को भी ज्वाइन किया है। एंड ये 90th मेंबर स्टेट बन गया है जिन्होंने अभी इसको IUCN को ज्वाइन किया। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स, इसके बाद एक और चीज याद रखेंगे। हमने देखा कि यहाँ पे ये इलेक्ट किए गए, राइट, फर्स्ट एशियन टू लीड द SSC। वहीं पे याद रखेंगे प्रेसिडेंट कौन रिलेक्ट किए गए हैं? रजान खलीफा अल मुबारक यहाँ पे रिलेक्ट किए गए हैं एज द प्रेसिडेंट। मूविंग ऑन, इंडिया भूटान बॉर्डर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी मीटिंग कहां पर हुई? थिम्पू, भूटान में हमें देखने को मिली, 16 से 17 अक्टूबर तक देखने को मिली, राइट। एम क्या रहेगा यहाँ पे? जो फ्यूचर रोड मैप है, जो चेक पोस्ट है उनकी मेंटेनेंस के लिए, बाउंड्री पिलर्स को, क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट को, उन सब के ऊपर ध्यान रखने के लिए ये हुआ। एंड ये 14th मीटिंग थी। इसके बाद आ जाते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस पे। RBI ने लॉन्च किया ग्लोबल हैकेथॉन हार्बिंजर 2025 ताकि बूस्ट करे, सिक्योर करे एंड बैंकिंग सॉल्यूशंस बेटर की जा सके। देखो, तो बेसिकली हम कहें एक तरीके से फिनटेक सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए ये किया जा रहा है, राइट, बैंकिंग सेक्टर को इंप्रूव करने के लिए किया जा रहा है। एंड हैकेथॉन क्या होता है? हैकेथॉन होता है बेसिकली जहां पर एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी जाती है एंड उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर कई सारी टीम काम करती हैं, सॉल्यूशंस लाती हैं। जो टीम बेस्ट सॉल्यूशन लाती है उनको प्राइज मिलता है, रिवॉर्ड मिलता है, एंड उनको सेलेक्ट किया जाता है कि फर्दर वो उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है उसके ऊपर काम कर सके, एक तरीके से स्टार्टअप बना सके, उनको मेंटर भी किया जाता है यहाँ पे, राइट। तो RBI ने लॉन्च किया ये ग्लोबल हैकेथॉन हार्बिंजर टू बूस्ट सिक्योर इंक्लूसिव बैंकिंग सॉल्यूशन। यहीं पे याद रखेंगे कि
जो विनर थे 40 लाख रुपए, रनर अप को 20 लाख रुपए एंड ऑल वीमेन टीम को 20 लाख रुपए का प्राइस मिला। यहीं पे एक याद रखेंगे, आरबीआई ने जो लॉन्च किया था स्वामी फंड को, राइट, स्वामी फंड को लॉन्च किया गया था कब, 2019 में। इसका एम क्या था, इसका एम क्या था कि जो भी रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स स्टॉल्ड है, रुक गए हैं, राइट, वो उन पे काम नहीं हो रहा है, कई सालों से रुके हुए हैं, उनको फंड किया जा सके, उनको रीस्टार्ट किया जा सके एंड लोगों को उनका घर पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पे आरबीआई ने अलाउ किया है स्वामी इन्वेस्टमेंट फंड वन को, राइट, कि इसको एग्जेम्प्ट किया जाएगा फ्रॉम ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस कि स्वामी फंड को यहाँ पे अभी स्वामी फंड को अलाउ किया जाएगा अंडर स्पेशल ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एग्जेप्शन के अंडर, करेक्ट। इससे क्या होगा, कई सारे बैंक्स एंड एनबीएफसी इन्वेस्टमेंट्स यहां पर आती हुई दिखेंगी एंड जो स्टॉल्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो वापस से स्टार्ट होते हुए दिखेंगे। अगर मैं आरबीआई की बात करूं तो गवर्नर कौन रहेंगे, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के भी आम आईबीआरडी, इनके द्वारा अप्रूव किया गया $280 मिलियन का लोन टू केरला अंडर केएचएसआईपी। ये केएचएसआईपी क्या है, केएचएसआईपी आपका केरला हेल्थ सिस्टम इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। इसका एम क्या है कि बेसिकली केरला में जो हेल्थ सिस्टम है हम उसको इंप्रूव कर सकें। यहाँ पे बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड लाइफ एक्सपेक्टेंसी प्रोवाइड कराने की बात की गई टू ऑलमोस्ट 11 मिलियन एल्डरली एंड वल्नरेबल इंडिविजुअल्स केरला में, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। इससे केरला का हेल्थ केयर सिस्टम इंप्रूव होता हुआ दिखेगा। $280 मिलियन का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स इसके बाद अभी सिटी यूनियन बैंक, राइट, इन्होंने नया डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस लॉन्च किया एट ग्लोबल फिनटेक फेस्ट। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट हुआ कहाँ था, जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में। इसको एनपीसीआई एंड पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया एंड फिनटेक कन्वर्जेंस काउंसिल के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया गया था। यहीं पे हम देखेंगे कई सारे इनिशिएटिव्स लॉन्च किए, जैसे यूपीआई सर्कल, यूपीआई रिजर्व पे, यूपीआई हेल्प, मल्टी सिग्नेटरी वर्कफ्लो, यूपीआई एनेबल्ड कैश विड्रॉल, देन बायो ऑथेंटिकेशन एंड फेस ऑथेंटिकेशन, सिटी यूनियन बैंक डिपेंड, एनटीबी फ्लो, सिटी यूनियन बैंक डिजायर, सिटी यूनियन बैंक रुपए एमएसएमई, ये सारी चीजें यहाँ पे हमें लॉन्च होती हुई देखी इसके दौरान। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क करके चलेंगे एंड यहीं पे याद रखेंगे सिटी यूनियन बैंक को रिकॉग्नाइज किया गया एज इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट ट्रस्टेड प्राइवेट सेक्टर बैंक। कहां पर, ग्लोबल फिनटेक फेस्ट के दौरान। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इकोनॉमी एंड बिजनेस के ऊपर। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, ये एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। इन्होंने एक एमओयू साइन किया इटली के टेस्मेक एसपीए के साथ, ताकि सरफेस माइनर इक्विपमेंट्स को इंडिया में लॉन्च किया जा सके, इंट्रोड्यूस किया जा सके। इससे मेक इन इंडिया इनिशिएटिव बढ़ेगा, इंडिजीनियस टेक्नोलॉजीज बढ़ेंगी एंड इससे हम देखेंगे कि इंडिया में बेटर इक्विपमेंट्स आएंगे। बेटर इक्विपमेंट्स आएंगे तो हमारी जो माइनिंग है वो स्ट्रांग होती हुई दिखेगी। माइनिंग अच्छी होगी तो हम क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ मिनरल्स, इन सब के रेयर अर्थ मेटल्स, इन सबको माइन कर सकेंगे, माइनिंग अपनी स्ट्रांग कर सकें। माइनिंग बढ़ेगी तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इक्विपमेंट बढ़ेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो ज़्यादा हम माइन कर पाएंगे चीज़ों को। ज़्यादा अगर हम माइन कर पाएंगे तो हमारा जो आउटपुट होगा कंपनीज का, जो प्रोडक्ट्स हैं वो बेटर हम मार्केट में ला सकेंगे। यहीं पे बेटर इक्विपमेंट होगा तो सेफ्टी इंप्रूव होती हुई दिखेगी, एक्सीडेंट्स कम होते हुए दिखेंगे, राइट, एंड एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इन्होंने 2 एडवांस्ड फास्ट पेट्रोल वेसल्स, इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अजीत एंड इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अपराजित, इनको लॉन्च किया। कहां पर, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में। मार्क करके चलेंगे, ये 42nd एंड ये 43rd इंडियन कोस्ट गार्ड शिप रहेगा, जो कि कंस्ट्रक्ट किए गए हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, मार्क करेंगे स्टूडेंट्स, इनको इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट है नासा। इन्होंने कंफर्म किया हमारा इंडिया अर्थ का एक नया काशी मून है। मून से काफी छोटा है, जैसे अर्थ है, मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, ऐसे ही ये भी काशी मून अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व करेगा फॉर नेक्स्ट 80 ईयर्स, आने वाले 80 साल तक, राइट, एंड 2085 तक, मतलब 2085 तक ये काशी मून अर्थ के ये नेक्स्ट 60 ईयर्स तक, मतलब नेक्स्ट 2083 तक अगर हम देखें, ऑलमोस्ट 57 to 58 ईयर्स यहाँ पर ये रिवॉल्व करने वाला है अर्थ के चारों तरफ। ये 18 से 36 मीटर इन डायामीटर है, इसको काशी मून बोला गया। ये को ऑर्बिटल एस्ट्रॉयड है, छोटा है, एस्ट्रॉयड है, इसे काशी मून बोला गया। इसका नाम क्या है, 2025 PN7। नेक्स्ट पे आ जाते हैं बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप, हमने अभी ऑब्जर्व करी गुवाहाटी असम में, करेक्ट, एंड दिस वाज द सेकंड ओकेशन, मतलब दूसरी बार इंडिया ने होस्ट किया है। इससे पहले हमने 2008 में होस्ट किया था, अब 2025 में होस्ट किया है। एंड इंडिया ने यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट टाइम यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता। कहाँ पर, इन द सुहानदिता कप। देखो ये चैंपियनशिप के अंडर ना 2 इवेंट्स होते हैं, एक होते हैं सुहानदिता कप, एक होता है आई लेवल कप। एक होता है सुहानदिता कप, एक होता है आई लेवल कप।
राइट। एंड सुहांदिता कप ने इंडिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। गोल्ड किसने जीता सुहांदिता कप में? अगर हम देखें चाइना ने, इंडोनेशिया ने सिल्वर एंड इंडिया एंड जापान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। करेक्ट मार्क करेंगे। गुवाहाटी असम में हुआ 6 से 19 अक्टूबर तक। इसके बाद आ जाते हैं ऑबिटरी के ऊपर स्टूडेंट्स। थाईलैंड्स क्वीन मदर सिरिकित कितियाकरा, इनका रिसेंटली निधन हो गया। शी वॉज बोर्न ऑन 12 ऑफ अगस्त इन 1932 एंड 93 की एज में बैंकॉक थाईलैंड में इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट आना है इंपॉर्टेंट डेज पे। ग्लोबल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन लिटरेसी वीक 24 से 31 अक्टूबर तक ऑब्जर्व किया जाता है। इसका एम रहेगा बेसिकली कि हम ग्लोबल मीडिया से राइट इंफॉर्मेशन के ऊपर काम कर सकें। कैसे मीडिया ने एक बहुत गेम चेंजर, एक या फिर हम बोले मीडिया एक गेम चेंजर रहा है इंफॉर्मेशन लिटरेसी को प्रमोट करने के लिए सभी के लिए। एंड 24 से 31 अक्टूबर तक ये डे वीक ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम रहेगी माइंड्स ओवर एआई MIL इन डिजिटल स्पेस। यूनेस्को के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है। 2012 में इसका फर्स्ट ऑब्जर्वेंस किया गया था। राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस। इसके बाद आ जाते हैं वर्ल्ड पोलियो डे। 24 अक्टूबर को ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसका एम रहेगा बेसिकली कि पोलियो के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराना। एंड जो बच्चे 5 साल से अंडर पोलियो इफेक्ट्स होते हैं एंड उनके नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट होता है, राइट, पोलियो वायरस जो हार्म लाता है उनकी बॉडी में, उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी एक थीम रहेगी एंड पोलियो एवरी चाइल्ड एवरी वैक्सीन एवरीवेयर। पोलियो अगर आपको नहीं याद हो तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं अमिताभ बच्चन जी का ऐड 4 बूंद जिंदगी की, वो पोलियो को एलिमिनेट करने के लिए ही था। एंड उससे काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिला था उस कैंपेन से। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंडिया को पोलियो फ्री डिक्लेयर कर दिया था 27 मार्च 2014 को। ठीक है स्टूडेंट्स, मार्क करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं डिसआर्ममेंट वीक। 24 से 30 अक्टूबर तक हम इसको ऑब्जर्व करते हैं कि हमें जो आर्म्स हैं, जो हमारे न्यूक्स हैं, मिसाइल्स हैं, बॉम्ब्स हैं, गन्स हैं, हमें उनको डिसआर्म कर देना चाहिए। हमें पीस की तरफ प्रमोट होना चाहिए, सिक्योरिटी के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। एंड कहीं ना कहीं हम देखें एक डे और ऑब्जर्व करते हैं स्टूडेंट्स, जहां पर हम बात करते हैं एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, जो कि वन ऑफ द मास डिस्ट्रक्शन वेपन है वर्ल्ड के पास, उनको भी एलिमिनेट करने का काम किया जाता है। तो इसका भी एम क्या है कि हम इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के ऊपर काम कर सकें। ये 24 से 30 अक्टूबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। अभी महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस जी ने अनाउंस किया दैट न्यू नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट विल बी रीनेम्ड आफ्टर किन के? लोक नेता DB पाटिल। तो नया नाम क्या होगा? लोक नेता DB पाटिल नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं, अभी उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ जिसको डिक्लेयर किया गया इंडिया की पहली चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट आफ्टर अचीविंग 0 रिपोर्टेड चाइल्ड मैरिज केसेस अक्रॉस 436 ग्राम पंचायत एंड 9 अर्बन लोकल बॉडीज। तो क्या नाम रहेगा इस डिस्ट्रिक्ट का? ये है बलौद डिस्ट्रिक्ट। एंड कहाँ पर है ये? छत्तीसगढ़ में ये हमें देखने को मिलती है। नेक्स्ट, करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द यूथ फोकस इनिशिएटिव लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो यहाँ पर अगर हम ऑप्शन देखें तो करेक्ट स्टेटमेंट बताना हमें कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। तो यहाँ पे सिर्फ बी ऑप्शन सही है, ए गलत है, सी गलत है। ए कह रहा है पीएम मोदी ने लॉन्च किया पीएम सेतु विद एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 50,000 करोड़ रुपीज। तो नहीं, ये 50,000 करोड़ की लागत से नहीं बल्कि 60,000 करोड़ की लागत से इसको लॉन्च किया गया था। वहीं पे सी ऑप्शन, अब ए ऑप्शन सही है। सी कह रहा है बिहार की रिवैम्ड मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भट्टा योजना, राइट, इन्होंने ऑफर किया 5 लाख ग्रेजुएट यूथ को मंथली अलाउंस ऑफ 2,000 फॉर 2 ईयर्स, राइट। तो क्या ये सही है? नहीं, 2,000 रुपये नहीं, 1,000 रुपये यहाँ पे ऑफर किया गया फॉर 2 ईयर्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अंडर द ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन दैट केम इनटू फोर्स ऑन 1 अक्टूबर, हाउ मच फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैज EFTA प्लेज टू अट्रैक्ट इन इंडिया ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। तो $100 बिलियन यहाँ पे अट्रैक्ट करने की बात कर रहे हैं इंडिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आने वाले 15 सालों में। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इंडियाज फर्स्ट कोऑपरेटिव मल्टी फीड कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट एंड पोटैश ग्रेनुअल प्रोडक्शन फैसिलिटी इनॉग्रेटेड। तो ये कहाँ पे रहेगी? ये अहिल्यानगर में रहेगी, महाराष्ट्र में। आने अगर हम इस प्लांट की बात करें तो इसकी कितनी कैपेसिटी बताई जा रही है? तो 12 टन तो यहाँ पे कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट से या फिर कंप्रेस्ड बायोगैस, एंड 75 टन हम देखें तो पोटैश ग्रेनुअल्स यहाँ पे बनाने की बात की जा रही है पर डे। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं, व्हाट इज द टोटल बजट अप्रूव्ड by the high level committee chaired by Amit Shah in October for mitigation, recovery and reconstruction projects 9 states में। तो कितना टोटल बजट अप्रूव किया गया? यहाँ पे 4,645 करोड़ रुपए अप्रूव करा गया है। मूविंग ऑन, फिर आते हैं, अभी किस कंट्री ने इंडिया के साथ एक्सरसाइज कंडक्ट करी? कोंकण एक्सरसाइज, राइट।
5 से 12 अक्टूबर तक ये एक्सरसाइज हुई थी। तो यूके एंड इंडिया के बीच में ये कोंकण एक्सरसाइज हमें देखने को मिली थी। टेक अ नोट ऑफ दिस स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट आ जाते हैं बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने बिल्ड किया वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड एट मिगला पास एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 19,400 फीट, एंड ये गिनी वर्ल्ड बुक ऑफ गिनीज रिकॉर्ड्स, राइट, उसमें भी यहाँ पे इसको ऐड किया गया। नेक्स्ट 71st नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक, इसको ऑब्जर्व किया गया 2 से 8 अक्टूबर तक अक्रॉस इंडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट वाज नॉट लॉन्च ड्यूरिंग द वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ वीक सेलिब्रेशन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड इसको ऐड नहीं किया गया था, बाकी सारे प्रोजेक्ट्स इसमें इंक्लूडेड है। नेक्स्ट फिर आते हैं किस सिटी को भी डिक्लेयर किया गया इंडिया की सेफेस्ट सिटी फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम, तो वो है कोलकाता, वेस्ट बंगाल, राइट, सेफेस्ट सिटी फॉर द 4th टाइम। और अगर हम बात करें अनसेफ सिटी कौन सी है, वो है कोची। कोची केरला इज द मोस्ट अनसेफ सिटी, राइट, और सबसे सेफेस्ट सिटी फॉर द 4th कॉन्जिक्यूटिव टाइम रहेगी कोलकाता, वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट स्टेट द ड्यूरेशन ऑफ इम्प्लीमेंटेशन फॉर 1500 करोड़ रुपीज क्रिटिकल मिनरल रिसाइकलिंग इंसेंटिव स्कीम, जिसका डिटेल गाइडलाइंस वर इशूड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस। तो ये कब से कब तक लॉन्च की गई है, ये आपकी स्कीम लाई गई है FY26 से लेके FY31 तक। नेक्स्ट किस मिनिस्टर ने लॉन्च किया पीपल्स प्लान कैंपेन, सबकी योजना सबका विकास अभियान, टू प्रिपेयर पंचायत डेवलपमेंट प्लान्स फॉर FY27। तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के द्वारा ये यहाँ पे लॉन्च किया गया पीपल्स प्लान कैंपेन। नेक्स्ट पे आते हैं चूज द इंस्टीट्यूशन, जहां पर यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, राइट, इन्होंने अप्रूव किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी इन अक्टूबर टू बूस्ट इंडिजीनियस सेमीकंडक्टर फैसिलिटीज। तो वो है IIT भुवनेश्वर, राइट, IIT भुवनेश्वर, करेक्ट। नेक्स्ट वेयर वॉज द 42nd सेशन ऑफ द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन असेंबली हेल्ड इन सितंबर टू अक्टूबर। तो कहाँ पर हुई थी ये असेंबली, ये मॉन्ट्रियल कनाडा में हमें देखने को मिली थी। नेक्स्ट आ जाते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द RBI डायरेक्शंस इशूड इन सितंबर। अगर यहाँ पे हम देखें तो ऑप्शन ए सही है एंड ऑप्शन सी सही है, बी गलत है। ये कह रहा है कि ये जो डायरेक्शंस है ये कब से लागू हो जाएंगी, 1 जनवरी 2026 से, नहीं, ये फ्रॉम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होती हुई दिखेंगी। फिर नेक्स्ट पे आते हैं एक्सिस बैंक, इन्होंने भी पार्टनर किया किसके साथ, इन्होंने फ्री चार्ज के साथ यहाँ पे पार्टनर किया, लॉन्च इंडिया का पहला गोल्ड बैक्ड क्रेडिट लाइन ऑन UPI, जिसका एम रहेगा टू सिंप्लीफाई वर्किंग कैपिटल एक्सेस, बिजनेस ग्रोथ फाइनेंसिंग एंड अर्जेंट लिक्विडिटी नीड्स। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अभी सितंबर के महीने में RBI ने अनाउंस किया नई स्कीम, ये अवेलेबल रहेगी फ्रॉम कब से कब तक, ये नई स्कीम्स अवेलेबल रहेगी 1 अक्टूबर से लेके 2025 से 30 सितंबर 2026 तक, राइट, जिसका एम रहेगा फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सेलरेटेड पे आउट, एंश्योर फास्टर सेटलमेंट ऑफ इनऑपरेटिव अकाउंट्स एंड अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स लाइंग विद द बैंक्स। नेक्स्ट अभी सेबी ने एक्सटेंड कर दी द डेडलाइन फॉर द कंप्लीट रोल आउट ऑफ क्या, तो यहाँ पे एक्सटेंड कर दी डेडलाइन फॉर रिटेल एल्गोरिदम ट्रेडिंग। AI की मदद से यहाँ पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, रिटेलर्स को भी ये ऑप्शन यहाँ पे लाया गया है और इसकी डेडलाइन अब एक्सटेंड कर दी है कब तक, 1 अप्रैल 2026 तक यहाँ पे इंप्लीमेंट करने का काम किया जाएगा। कौन इंप्लीमेंट करेगा, CAMS एंड KFIN के द्वारा इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। नेक्स्ट अभी सितंबर में RBI ने इम्पोज की पेनल्टी ऑफ 31.8 लाख रुपीज किस बैंक पर फॉर नॉन कंप्लायंस विद द डायरेक्शंस ऑन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टारगेट्स एंड क्लासिफिकेशन। तो ये इंडियन ओवरसीज बैंक पर यहाँ पर अभी पेनल्टी इम्पोज करी गई। फिर आ जाते हैं कितना लोन अमाउंट वाज अप्रूव्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंदौर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट इन मध्य प्रदेश बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो कितना प्रोजेक्ट अमाउंट अप्रूव किया गया था, तो $190 मिलियन यहाँ पे अप्रूव करे गए थे। फिर है किस ऑर्गेनाइजेशन ने ग्रांट किया SRO स्टेटस, किस ऑर्गेनाइजेशन को ग्रांट किया गया ये SRO स्टेटस, SRO होता है सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन स्टेटस RBI के द्वारा। तो किसको सम्मत किया गया है, ये FIDC फाइनेंस इंडस्ट्री डेवलपमेंट काउंसिल को। नेक्स्ट है उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताओ जिन्होंने कोलैबोरेट किया सेबी के साथ टू डेवलप वैलिडेट UPI हैंडल्स एंड सेबी चेक इनिशिएटिव्स लॉन्च्ड इन अक्टूबर, जो स्ट्रेंथन करेगा इन्वेस्टर पेमेंट सिक्योरिटी को। एट द रेट ऑफ वैलिड यहाँ पे ये हैंडल्स भी लॉन्च करे गए हैं, किसके द्वारा ये लॉन्च किए गए हैं, तो NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इनको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट
आइडेंटिफाई दैट बैंक जिन्होंने पार्टनर किया उमुंथू सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ एंड लॉन्च किया इंडिया का पहला यूथ फोकस्ड डिजिटल बैंकिंग एप्लीकेशन कॉस्मोस गैलगल ऐप को इन अक्टूबर। तो आइडेंटिफाई दैट बैंक, वो कौन सा बैंक रहेगा? वो है कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। नेक्स्ट, उस प्रोडक्ट का नाम बताओ जो कि लॉन्च किया गया जॉइंटली बाय फोनपे एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इन अक्टूबर थ्रू फोनपे ऐप, जो ऑफर करता है फिक्स डिपॉजिट बैक क्रेडिट फैसिलिटी स्टार्टिंग फ्रॉम 2,000 रुपये। तो वो है विश क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज इंडियाज जीडीपी इन बोथ FY26 एंड FY27 एज फॉरकास्टेड बाय एशियन डेवलपमेंट बैंक इन देयर रिपोर्ट टाइटल एशियन डेवलपमेंट आउटलुक ग्रोथ स्लोज एज अ न्यू ग्लोबल ट्रेड इन्वायरमेंट टॉक शेप सितंबर, रिलीज्ड इन सितंबर। तो क्या जीडीपी ग्रोथ है? 6.5% यहाँ पे प्रोजेक्ट करी गई। Find out the individual who is not among the top 5 richest Indians as per the M3M Huron India Rich List released in September। तो कौन है यहाँ पे? शाहरुख खान जी इस लिस्ट पे नहीं थे, राइट। टॉप किसके द्वारा की गई? सबसे पहले तो याद रखेंगे 14th एडिशन है ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट का, M3M ह्यूरन इंडिया रिच लिस्ट का। M3M काफ़ी प्रोमिनेंट बिल्डर है, गुरुग्राम हरियाणा में है, ये ऑपरेट करते हैं एंड इन्होंने कोलैबोरेट किया है यहाँ पे ह्यूरन इंडिया के साथ एंड ये लिस्ट रिलीज की। गौतम मुकेश अंबानी चेयरमैन ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड 9.55 लाख करोड़ की लागत से ये फर्स्ट पोजीशन पे थे एंड सेकंड पोजीशन पे आ जाते हैं गौतम अडानी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द पर्सन हु वर अनाउंस्ड एज द विनर्स ऑफ द नोबेल पीस प्राइज और नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन। तो आइडेंटिफाई द पर्सन्स, कौन है वो इंडिविजुअल्स? वो हैं शिमोन सागागुची, मैरी ई बर्कनो, फ्रेड रैम्सडेल, राइट। ये तीनों को यहाँ पे सम्मानित किया गया नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन से। नेक्स्ट, चूज द मिनिस्ट्री दैट इंप्लीमेंट्स द नेशनल सर्विस स्कीम अंडर द माई भारत NSS अवार्ड्स 22-23 दैट वर प्रेजेंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू मैम। तो चूज द मिनिस्ट्री, कौन सी मिनिस्ट्री रहेगी? वो है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु अमंग द फॉलोइंग जॉइंटली रिसीव द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रिसीव्ड, किन्होंने रिसीव किया यहाँ पर? तो तीनों के द्वारा यहाँ पे इसको रिसीव किया गया नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो वो है आशीष पांडे एंड MD एंड CEO ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, वो है कल्याण कुमार। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट आ जाता है, किनको अपॉइंट किया गया एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विकसित भारत बिल्डथॉन, जो कि एक नेशन वाइड इनोवेशन इनिशिएटिव है जिसका एम रहेगा टू एंगेज द स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 6 to 12 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो किनको अपॉइंट किया गया है ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर? वो है शुभांशु शुक्ला, राइट। ये एक्सियोम 4 मिशन की मदद से किम में गए थे, बेसिकली नासा का ये मिशन रहेगा एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने वाले ये पहले इंडियन बन गए हैं। फिर आ जाते हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताओ रिगार्डिंग द 15th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड पैरा आर्चरी चैंपियनशिप, जो कि साउथ कोरिया में हमें देखने को मिली, राइट। तो पिक आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही रहेंगे, करेक्ट, मतलब तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, मेंशन द नेम ऑफ द कंट्रीज गोइंग टू को होस्ट द इनॉग्रल वीमेंस T20 वर्ल्ड कप क्रिकेट फॉर द ब्लाइंड। ब्लाइंड वीमेंस के लिए ये वर्ल्ड कप हो रहा है, इनॉग्रल T20 वर्ल्ड कप। इंडिया और श्रीलंका के बीच में इनको को होस्ट किया जा रहा है, राइट। मतलब को होस्ट कौन कर रही है, कौन सी कंट्रीज? तो इंडिया एंड श्रीलंका। नेक्स्ट फिर आ जाता है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 12th वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप होस्टेड बाय इंडिया इन जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फ्रॉम 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। तो मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी तीनों यहाँ पे बिल्कुल सही रहेंगे एंड ये 12वां एडिशन है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किन्होंने जीता 24वां एडिशन ऑफ F1 सिंगापोरियन ग्रैंड प्रिक्स, जो कि मेरीना बे स्ट्रीट सर्किट में हुआ है इन सिंगापुर। तो जॉर्ज रसल के द्वारा इसको जीता गया। जॉर्ज रसल की बात करें तो ये मर्सिडीज़ के लिए ड्राइव करते हैं एंड यूके से ये बिलोंग करते हैं। सेकंड पे मैक्स वर्स्टैपेन एंड लैंडो नॉरिस ऑन थर्ड पोजीशन। फिर आ जाते हैं, पद्मा विभूषण अवॉर्डी पंडित चन्नूलाल मिश्रा, इनका भी निधन हो गया, जिनको पद्मा भूषण से 2010 में एंड पद्मा विभूषण से 2020 में सम्मानित किया गया था। इनका कंट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड इनके लिए, इस आर्ट्स के लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया। इनको वॉइस ऑफ बनारस के नाम से भी जानते हैं। फिर आते हैं, UN इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस, ये ऑब्जर्व किया जाता है 1 अक्टूबर को टू ऑनर द राइट्स एंड वेलबींग ऑफ ओल्डर पीपल, जो कि पहली बार ऑब्जर्व किया गया था कब? 1991 में इसको पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। फिर नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक 2 से 8 अक्टूबर तक इसको ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ को प्रमोट करने के लिए। आपसे यहाँ पे थीम पूछी जा रही है 71st एडिशन ऑफ नेशनल वाइल्ड लाइफ
वीक की। थीम रहेगी सेवा पर्व। फिर अगला है वर्ल्ड स्पेस वीक। वर्ल्ड स्पेस वीक हम कब से कब तक ऑब्जर्व करते हैं ये पूछा जा रहा है। तो 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं वाइल्ड लाइफ और वर्ल्ड स्पेस वीक को, ठीक है। एंड लिविंग इन स्पेस ये यहाँ पे थीम रहेगी, लिविंग इन स्पेस ये यहाँ पे थीम रहेगी। नेक्स्ट पे आते हैं, आइडेंटिफाई द रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन जिसके साथ पीएफआरडी ने भी एक एमओयू साइन किया ड्यूरिंग द सेलिब्रेशन ऑफ एनपीएस दिवस 1 अक्टूबर को, राइट। तो ये है कौन, नाबार्ड। नाबार्ड ने पीएफआरडीए के साथ ये एमओयू यहाँ पे साइन किया। नेक्स्ट है वर्ल्ड हैबिटेट डे। हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड हैबिटेट डे कब, 6 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे ऑब्जर्व किया जाता है। फिर हु वन द मेंस 100 मीटर टाइटल एट द नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि बिरसा मुंडा स्टेडियम रांची में हुई। तो मणिकांता होबलीदार इनके द्वारा यहाँ पे जीता गया, 10.19 सेकेंड्स के साथ इन्होंने जीता है एंड ये इंडिया का सेकंड फास्टेस्ट टाइम रहेगा। Next is our homework question, students. First question is, 5th edition of the Khelo India University Games will be held across how many cities and where in which state this will be held? Second question, who has won the MLS Golden Boot with record breaking season? Then third question, tell me recently FIDE Chess World Cup will be held where and in which state it will be held? Then fourth question, fourth is, when do we observe World Anesthesia Day? What is the theme for this World Anesthesia Day also? And fifth question is World Statistics Day. When do we observe it and what is the theme of it? Tell me that. So that's all for the day, students, and I need to see maximum participation from all the students watching this video.